Ram Lala ka chehra came on the screen, the first shot, it was like everybody started crying. Today everybody wants to be in the camera. Look at this one. Come camera, he has to be here. Otherwise he's not with me. Huh? People ask me, आपने कितने गाने गाए? My answer is जितने आपको याद है. Okay, right, right. Because इसका नंबर का क्या करेंगे? Correct. अच्छा आपने इतने गाए? ऐसे बोला तो? I always looked at T series की. I told Vaishno Devi, I said, look, T series for me is Vaishno Devi company. I never forget that. विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधार हीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गणान्तं सुखान्तं स्वयं धाम रामं प्रपद्ये शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं सुखाकारमाकार शून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरेशं महेशं प्रपद्ये. Anuradha ji, namaskar. Namaste. And I should say Jai Shri Ram because you've Yes, just of come course. back. You've just Jai come Shri back. Ram. You've Yes. just come back from the Ram Mandir. Yes, yes. So what was it like? Wow, it was a ethereal experience, just simply out of this world. And it is absolutely fascinating when I think that a struggle which has been going on for more than 500 years should culminate, and we should be a witness to it. And more than a witness, I am just really superlatively blessed that me and my daughter could have got a chance to sing at that At the Pran Pratishtha. at the Pran Pratishtha. There's something like that. I mean, when I think of how many crores of people there are who sing Yes. in India, and that we should be invited to sing, especially on that day. It was absolutely an experience that you can't forget. यदा वर्णयत्कर्णमूलेऽन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काशा तदेकं परं तारकब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहम्. Was it for you personally a very uplifting movement? Absolutely, and there is a reason for that, because 20 years back when the murti was behind like it was kept behind bars and puri sakhal laga ke vagare in chains vagare, so that it shouldn't be stolen, and it was in a tent. And like I was not aware of that, and when I had a program there, the Ram Leela program. So when I went there, and with a lot of enthusiasm, I said, Are Ayodhya hai, so let me go and see Ramji ka darshan karne do. And I went inside. I was horrified to see the state in which Ram Lala was. And I was just in tears. I said, it just hit me so hard that in a place like India, Hindustan में राम लला की ये हालत है, that decent temple भी नहीं है उनके लिए. So I was in tears, and it just stayed with me. And then in the evening in the program, I said, and I told Ram Lala when I was in the temple, I said, look, I'm eagerly waiting for you to come out and have a bhavya mandir आपके नाम का हो, and which will be the pride of the entire nation. Right. And the day that happens, I will come and sing for you. अच्छा आपने कहा 20 साल पहले. अच्छा, okay. So I mean, emotional outburst होता है ना उस तरह से. So I said कि I will come and sing for you. And then फिर तो of course the rest is history कि किस तरह से वो temple बना. And then of course invitations were personally given with Akshata, and that was a very
emotional moment that itself, because especially in Maharashtrians, we give akshata only to very, very people who are very respected or very close to us for a occasion which, जैसे हमारे घर में किसी का अगर मंगल कार्य हो रहा है तो हम किसी को इनवाइट करने के लिए, यू डोंट गिव इट टू जस्ट एनीबडी एंड एवरीबडी, नो, यू गिव इट टू समबडी हु इज़ वेरी वेरी क्लोज. तो घर जाके उनको अक्षता दे के, हल्दी कुमकुम लगा के, अक्षता दे के बुलाते कि नहीं आपको ज़रूर आना है, you know. So it's that personal touch which is meant for very very special people, but that is what I think, I mean, whoever's brainchild it was to give akshata to about 5 crore people, it's not a joke. It's not a joke, you know, even thinking about it, but everybody did that with such enthusiasm, and I think that is what brought people together. That's right. Anyway, the invitation was given, and the RSS people came, they invited us and gave us the invitation, and then I generally asked them, so they were saying कि नहीं ऐसे प्राण प्रतिष्ठा होगी, मोदी जी आएंगे और सेंट्स और सभी you know from all walks of life लोगों को बुलाया वगैरह. तो there was no mention of any program or anything like that. अच्छा. हाँ. So मैंने फिर अपने मेरे मन में आया दूसरे दिन ऐसे रामलीला, मैंने तो आपको आई नो आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि आपकी जब स्थापना होगी तो मैं गाऊंगी, बट यू नो जैसे अभी गवर्नमेंट का है, नहीं गवर्नमेंट हैज़ अरेंज द प्रोग्राम, तो उनका प्रोटोकॉल जो भी होगा, फिर आरएसएस वालों का उनका प्रोटोकॉल क्या होगा, दे हैव देयर ओन एजेंडा. सो आई सेड माय प्रॉमिस स्टैंड्स, लेकिन वो गाना मेरे से गवाना वो आपके हाथ में है. You know, to keep my promise, let me keep my promise, is in your hands. And you will not believe, Bharti, this is when I was praying in the morning. In the afternoon, I got a call from Gauri from Times. She said, when Mr. Yatindra wants to contact you, shall I give him your telephone number? I said, of course. And then Yatindra ji called me in the evening, immediately. He said, Anuradha ji, I am the son of the king of Ayodhya. Oh. हाँ. और हम चाहते कि प्राण प्रतिष्ठा के वक्त आप 5 मिनट गाएं. Wow. I was in tears. I just burst into tears. Right. And I mean, you know, of course मैं गाऊंगी, ये भी बोल पाना, it was so difficult. Because you know something that was only between you and Ramji. Yes, absolutely. And I said, you know, because everybody, because I'm a singer, so जिनको मैंने बोला था कि हाँ मैं जा रही हूँ अयोध्या, तो उन्होंने बोला कि फिर तुम्हारा प्रोग्राम भी है क्या, तुम्हारा प्रोग्राम भी है क्या, तो नेचुरली पूछते हैं. सो आई सेड मैं वहाँ से आके बताऊंगी मैंने वहाँ क्या क्या किया. अच्छा, okay. You know, because you never know. But this was the last thing. I mean, I was not even aware कि आज भी मतलब अयोध्या में रामला मतलब किंग है वहाँ पे, and I didn't know how to react, and immediately I told my daughter, I said ऐसे ऐसे है, and then just 3 days before I had, because I have started working on the works of Shankaracharya. Oh. Yes, I've started doing recording शंकराचार्य की जो जितनी भी स्तुतियाँ हैं, जैसे सौंदर्य लहरी है या महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र है, भज गोविंदम है. तो आई सेड सिंस रामलीला का मंदिर बन रहा है, व्हाई नॉट record something which Adi Shankaracharya has written on Ram. Oh, wow. So that was the Ram Bhujanga Stotra. Okay. Yes. Right. And I had gone to Vedant Bharati where I had heard the disciples of Swamiji singing, and it is such a beautiful composition. Very simple, but you know it goes straight to the heart. बहुत अच्छा लगा था मुझे. So I said, why not record that? महारत्न पीठे शुभे कल्पमूले सुखासीनमादित्य कोटि प्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं. And वो मैंने
जस्ट रिकॉर्ड किया था। Okay. तो फिर मैंने यतेंद्र भाई को पूछा, मैंने कहा भैया, ही सेड 4 लोगों को हमने कांटेक्ट किया है, एक है शंकर महादेवन, एक आशा जी है, और एक सोनू निगम, और एक आप हैं। तो आई सेड डू यू हैव एनी आइडिया कि वो लोग क्या गाएंगे? बिकॉज इन ऑल प्रोबेबिलिटी व्हाट आई थॉट वाज दे वुड सिंग श्री रामचंद्र कृपाल भजन और मंगल भवन मंगल हारी, बिकॉज दैट्स मोस्ट पॉपुलर। सो आई सेड आई डोंट वांट माय सॉन्ग टू क्लैश, Right. यू नो, कि मैं वही गाना गाऊं, आई डोंट वांट लाइक दैट। तो मैंने कहा मैंने अभी परसों कुछ रिकॉर्ड किया है, आप एक बार सुन के विल यू गेट बैक टू मी? ही हर्ड, ही से बस इसी को गाना है आपको, Lovely. राम भुजंग, एंड स्पेशली सिंस इट वाज रिटन बाय आदि शंकराचार्य, Shankaracharya. सो उसका एक अलग महत्व होता है। That's right. And then I was absolutely in tears, and all the time, you know, रोंगटे खड़े होते रहते हैं, कि ये कैसे, मतलब हाउ द डेवलपमेंट्स वगैरह कैसे हुए। Correct. एंड देन वी वेंट देयर, एंड there was a huge orchestra there, of course they were playing, and that was a unique idea really. And Yatindra ji is also great म्यूज़िक पर्सन, मतलब हाँ बहुत जानते हैं वो उसके बारे में, एंड टेक्स अ वेरी कीन इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, मतलब ही इज़ अ रियल आर्टिस्ट। तो उन्होंने क्या कहते कि हर स्टेट में से जो पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट जो बजाते सबको बुलाया था अलग अलग स्टेट में से, हाँ, यू नो, दैट वाज द ब्यूटी। देखा, हाँ, yes. सो दैट वाज द ब्यूटी ऑफ इट, हर स्टेट का जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है। एंड देन ऑफ कोर्स वैष्णव जन तो भी बज रहा था, रघुपति राघव भी बज रहा था, बट ऑल ऑफ देम वर प्लेइंग। सो दे सेड कि आप 4 गाने वाले हैं, एंड देन आई थिंक मालिनी अवस्थी वाज फ्रॉम देयर। तो ही सेड कि बाकी सब एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इंस्ट्रूमेंटल। तो देन yes, very close to the Muhurat, you know, Kavita and me sang that. Nice. Yes, So it's like a dream come true. Dream, matlab it's more than a dream also, Yeah, you know, it's like कि it's a very different feeling when something which you have not even mentioned to a third person. Yes. Nobody, I'd never mentioned it, you know. It was just between राम लला, जब उस वक्त मेरा जो आउटबर्स्ट हुआ था, तो उस वक्त मैंने उनको बोला था, एंड देन आई सेड कि आई कांट बी गोइंग एंड यू नो टेलिंग पीओ में मैंने रामलाला को बोला है तो मेरा प्रोग्राम रखो। करेक्ट। या एंड नॉर कुड आई टेल, किसी को बोलना मतलब इट वाज इम्प्रैक्टिकल ना। तो मैंने बोला वो माय प्रॉमिस स्टैंड्स, हाउ मच टू रिस्पेक्ट इट इज अप टू यू, ओके। एंड आई गेट अ कॉल फ्रॉम अ पर्सन, मतलब आई जस्ट टोल्ड हिम, आई सेड भैया मैं आई एम गोइंग टू बी इंडेप्टेड टू यू फॉर माय एंटायर लाइफ, you know. And it was one of that moment when you feel अच्छा शायद मेरा जन्म, मतलब I came to this world only for this moment, ये करने के लिए, you know, मतलब everything that you have been doing has been building up everything मतलब छोटी बातें। and then I realized कि ये तो that this is my part of the story, मतलब जो what was applicable to me, मेरी भावना। but I am sure कि इवन अब सिंपल मेजन भी था वहाँ पे जो काम करने वाला था, पत्थरों को स्कल्प करने वाला था, ईच एंड एवरी पर्सन, इसका इतना छोटा योगदान तो था ही, यू नो। सो इट वाज लाइक 500 years रामलला वाज, और द यूनिवर्स वाज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू कम टुगेदर, यू नो, बिकॉज हर एक को कुछ ना कुछ तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऑफरिंग थी, कुछ भी थी, whatever it was, you know. So it was, मतलब जब सबके ग्रह इकट्ठे आके, सब लोग इकट्ठे जहाँ पे आके वो हुआ, तो you know. So and another beautiful thing that I saw that day, what I felt that day was कि एक होता है कि कुछ लोग कृष्ण के पुजारी हैं, एंड कुछ लोग शिव जी के पुजारी, कुछ गणेश जी के ना, हम तो माता को मानते हैं, सभी सबको मानते हैं, लेकिन अल्टीमेट राम, दैट्स राइट, यू नो, मतलब ही वाज इवन अबव रिलीजन,
That's right. He was above religion, he was more of a cultural ambassador. That's right. मतलब एक युग पुरुष कहते हैं कल्चरल, जो सबको इकट्ठे लाता है. यू वर्शिप एनीबडी बट Yeah. ही इज द वन. यू नो वो फीलिंग जो आई है, उससे सभी लोग, वेदर वो सन्यासी थी, वेदर इट वाज अमिताभ बच्चन, इट वाज माधुरी दीक्षित, इट वाज मतलब किसी मे बी विराट कोहली थे या हम लोग थे या कुछ, जो उनका मतलब उसके पहले सब सेलिब्रिटीज वगैरह थे. यू नो टिल द टाइम राम लला का चेहरा came on the screen, the first shot, it was like everybody started crying. Right. Some people became hysterical, some people but we couldn't talk, but people were asking कि आपको क्या लग, don't ask. Choked with But emotion. we were actually choked. And फिर मतलब everybody went into oblivion. There was no celebrity, nobody was a celebrity. Correct. एक ही था. एक राम लला ही था. हाँ. एक ही था. That's right. यू नो मतलब जैसे एक होता है ना कि कोई जनरली हम देखते हैं कि कोई फंक्शंस में जाते हैं वगैरह, तो उसमें सेलिब्रिटीज़ वगैरह तो उनका थोड़ा यूफोरिया रहता है That's वगैरह. right. Yeah. फॉर एवरीबडी टू फील द सेम, ईच एंड एवरी वन टू फील द सेम, मतलब उनके बियॉन्ड कुछ नहीं. So it was मतलब it was, the atmosphere was something Oh, you've it never was experienced before. electrifying. It was electrifying and spiritually uplifting. Spiritually uplifting, culturally uplifting, and very personally Bharti, and I'm sure trillions will agree with me. You know, कोई ऐसा लगा मुझे कि कोई चीज़ हम लोगों में जो थोड़ी हल्की सी अधूरी थी ना, वो कंप्लीट हो गई. Okay. अच्छा ऐसा लगा. Yes, yes, Okay. absolutely. Okay. मतलब जैसे हमने कई बार पढ़ा है या सुना है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, है ना. तो कहीं पे भी जाते थे तो एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड भी सोचते थे कि बोलना चाहिए यहाँ पे, नहीं बोलने की ज़रूरत है नहीं. अभी ये होगा क्यों नहीं, ऑफ कोर्स Okay. हमें हिंदू होने का गर्व है. You know, that kind of a thing. You don't hesitate anymore. No, you don't hesitate. और ये it was like that मूर्ति was unveiled, और it was कि उनका ऑरा पूरे यूनिवर्स में फैल गया. Right. Not कि खाली जो उधर बैठे हुए थे. And I don't think कि there is a single temple in the entire universe जिसके लिए लोगों के ऐसे आंखें लगी हुई है कि ये हो रहा है और लाइव प्रक्षेपण हुआ. You tell me one temple in the world. True. Yeah. It is something. Yeah. पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई है, दुनिया की नजरें. इवन जो मतलब और भी मतलब जैसे यू नो कोई जर्मन होगा, फ्रेंच होगा, वो भी देख रहे कि सुना है कि ऐसे ये कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है ये तो देखे. यू नो. So that was the kind of aura that he commanded, and it was just absolutely phenomenal. Another thing that which was really commendable, of course बहुत लोगों का इसमें योगदान गया है, hats off to them. वहाँ की व्यवस्था was world class. Okay. It was absolutely world class. Considering how many people came, there was no chaos. No chaos मतलब at all. Well managed. You were invited and you went properly. There was no chaos. You knew where to go, how to बिल्कुल भी नहीं. तो RSS वाले को उनको मैंने बोला था. अच्छा उन्होंने, मैंने कहा भैया मुझे तो मतलब टेंशन थी कि रात को हम लोग 12 बजे पहुंचेंगे तो कहाँ ढूंढेंगे किसको. करेक्ट. यू नो, तो एक शहर है तो फिर भी पता है. अयोध्या में अभी तक तो वैसे होटल्स वगैरह तो करेक्ट है नहीं. तो मैंने उनको RSS के अजय जी करके थे, तो उनको भैया प्लीज़ कम से कम मुझे एड्रेस तो बता दो, ड्राइवर को बोलना है गाड़ी कहाँ लेके आनी है. यू नो, बोले ताई आप जब लखनऊ से निकलेंगे ना मुझे फ़ोन करिए. आई सेड दैट इज़ टू क्लोज, दैट इज़ जस्ट टू क्लोज. यू नो,
एंड देन आई आस्क्ड हिम अबाउट 6-7 टाइम्स कि मुझे एड्रेस दीजिए. नहीं आपकी व्यवस्था हो गई कैप्टन सिंह, आपकी व्यवस्था हो गई है, तो आप वहाँ से निकलेंगे तो आप बताएं तो हम आपको बताते हैं. फिर देन अदर पीपल वर आस्किंग मम्मी कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं. मैंने कहा अभी मत पूछो. मैंने कहा जिसने बुलाया ना तो अपने हो सकता है कि अपने बगल में ही मुझे वो रखना चाह रहे हैं, मतलब राम जी. You won't believe it, 11:45 at night, अयोध्या में जाके these people gave us a room in the ashram. Okay. The one which was closest to the temple. Wow. मतलब almost मतलब you know जैसे ऐसे पकड़ लेते हैं बच्चे को या अपने को. So मतलब that wall of the राम मंदिर और हमारा जो आश्रम था वो वॉल एक थी. एक ही. Okay, so on the other side was the temple and here you were. Okay. So you know these kind of experiences कि हम कभी ऐसे बोलते हैं and it just brings you closer to, मतलब बोलने वाले इसको coincidence भी बोल सकते हैं, but नहीं, it's not like that. Your whole life, because you were, from what I remember, you were so popular as a playback singer. लेकिन बाकी लोगों ने भी किया है, मतलब डिवोशनल म्यूजिक सबने किया है, लता जी ने किया है, सबने किया है. But you, at the peak of your popularity as a playback singer, Yes. at that time you had started making devotional albums. Bharti, the reason is because the reason was, you know, when I was I had just started singing and Rafi साहब was there, किशोदा के साथ duets होते थे, रफ़ी साहब के साथ, मुकेश जी के साथ वगैरह duets वगैरह होते थे. तो each one, every artist has to go through this because it's age and it's human, it's hard mass का शरीर है तो it goes through और होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं और फर्स्ट थिंग दैट इट थोड़ा सा फर्क पड़ता है तो वॉइस पे फर्क पड़ता है या वॉट एवर यू नो, बट it doesn't mean that you forget the trillions of songs that somebody has sung. Correct. और नहीं ये कुछ आजकल कुछ you know, and I happened to hear that about a very very established singer. मतलब हम duet गा के I was leaving महबूब स्टूडियो में, तो कुछ लोग बाहर खड़े थे जिनको म्यूजिक का वैसे भी अकड़ है नहीं, बिकॉज जिसको आता है वो ऐसे कभी बात बोल ही नहीं गए. ओके, बट दैट वाज यू नो आई वाज वेरी यंग एंड एट दैट टाइम इट जस्ट हिट मी कि हाउ कैन दे मेक सच अ कमेंट ऑन सच अ सीनियर सिंगर. एंड व्हाट अबाउट जो उन्होंने गा के भंडार रखा है उसके बारे में क्या. एंड उस वक्त आई मेड अप माई माइंड कि भगवान जी आप जब मुझे नंबर 1 पे लेके जाओगे ना तो आपका नाम लूंगी उसके बाद. Really? Yes. So that's how your devotional albums came about. Yes. तो उसके बाद तो चलते रहे. Then I happened to go to Dakshineshwar and it was about 12 years. And Hero was a very very big hit. Yeah. And naturally उसके पहले तो like I never really कि मुझे बहुत गाने मिलने चाहिए because I come from a academically you know sound family. Right. So my father was never, he said why do you want to sing, अच्छा डॉक्टर बनो, ये बनो, वो बनो, अच्छी लड़की, घर की लड़कियां नहीं गाती है, all that. Yeah. आप अलका नाटकर. Yes. And my father was not very keen. In fact दुखी थे वो कि मतलब. अच्छा, okay. He said कि नहीं फिल्म इंडस्ट्री वगैरह is not the place for you. पर लेकिन होते गए, मतलब एक के बाद गाने होते गए. And it was 12 years and then Hero का जब गाना really became a big hit, that was the only time I think in my life जो मुझे लगा कि अरे मुझे और अच्छे गाने मिलने चाहिए. That was the only time. That was iconic. Yeah. हाँ, तू मेरा जानू है. And that was the only time. And then उसके बाद तो then started the era of all multi-star cast films. तो उसमें 4, 5, 6 सिंगर्स होते थे, हर एक को आधी लाइन, एक लाइन, ऐसा ही चला सारा. देन वी अप्रोच्ड पॉलीडोर म्यूजिक इंडिया कि मुझे एक एल्बम करना है, तो आई वुड लाइक टू डू समथिंग इन डिवोशनल. इसे नहीं
मार्केट में पता किया आपका कोई मार्केट नहीं है डिवोशनल का, Oh. तो आपको कोई गीत करो. आई सेड लुक आइदर इट इज, मतलब उसको कोई एक होना चाहिए गीत, मतलब यू कांट रियली right. उसको प्लेस नहीं कर सकते. Anyway, then at that time I happened to go to Dakshineshwar temple. Okay. And I was sitting there and वहाँ के पुजारी ने कहा कि अनुराधा एक माँ का भजन सुनाओ. And it just hit me कि 12 years I've been singing. इतनी मतलब बरकत दी है and so much success she has given me, but माता का मेरे पास एक भी गाना I didn't know, आता ही नहीं था. I said I'm so sorry. What have I done? मतलब ऐसे कैसे हुआ? You know कि it didn't even occur to me. I said माँ मुझे जितने मंदिर है ना वो सबके साथ जोड़ दे. मुझे आज आशीर्वाद देना, जितने मंदिर है ना उन सब पे मैं गाऊँ, सबके साथ जोड़ देना. और मुझे I don't want to leave the industry when you know कि मैं आधा लाइन कर रहा हूँ, एक नॉट लाइक दैट. नंबर 1 करना मैं अपने हाथ से आपको अर्पण कर दूंगी एंड आई विल शिफ्ट टू डिवोशनल. Oh. सो देन व्हेन हीरो एंड ऑल दैट स्टार्टेड हैपनिंग, मतलब हीरो नहीं, हीरो के बाद आशिकी, दिले के मंतनी, सड़क साथी, लाइक इन आई थिंक अबाउट 18 months or so there were about 10 films जिसके 10-10 गाने वो सारे हिट थे. Yes. एंड जो करते थे वो हिट था. मतलब शिवाराधना वो हिट, ममता का मंदिर वो हिट, मनाचे श्लोक वो हिट, राम भजन वो हिट, गज़ल आशिया विद पंकज जी वो हिट. बट जो करो ना तो वो हिट, यू नो. और उस वक्त व्हेन आई वाज एट द पीक, देन आई सेड ओके थैंक यू वेरी मच, नाउ आई एम हैप्पी. And you started doing your devotional music. पर उसके बाद फिर डिवोशनल, जैसे पूरी भगवद गीता सप्तशती इन 3 लैंग्वेजेस, मराठी, हिंदी, संस्कृत, गुजराती. Did Gulshan ji encourage you in this? Because you, T-Series, Gulshan ji, you were the people who gave devotional music that kind of platform. He was always encouraging for anything because he had that knack to understand, you know, कि नहीं ये correct चीज़ हो रही है. Because he was also a commercial man. So He was commercial, but he had to be na. but he understood कि There is devotional nothing- music का Of course, because when I entered T-Series, okay, जो मैंने सप्तशती की, उसके बाद जो मनाचे श्लोक, that was an instant hit. Alright. Instant hit, मनाचे श्लोक. But जब आपने शुरू किया, they allowed you to do it? T-Series में? I entered with दुर्गा सप्तशती ना. Okay. Alright. And that was such a big hit. Yes. मतलब नहीं, उसके बाद जो जैसे तुलसी भजन, फिर कृष्ण भजन हुआ, तो मतलब लाइन से तो डिवोशनली हुए क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं था. Correct. And then and this Saptashati I had done with Babuji. That's Gulshan ji's father. Oh, really? First 4-5 albums I did with him. Then Gulshan ji came on the scene. Oh, okay. You know, and then they decided to make, because they had just entered the industry, so they decided to make a film, and it was called Mamta Ka Mandir. Now he had of course the world knows his love for Mata Vaishno Devi. So for him Mamta Ka Mandir was Mata. Mata. Mother means Mata. So he approached Miss Directors कि मैं ऐसा करना है, तो Miss Directors ऐसा आपको सुपर हिट गाना दे देंगे ना, मतलब देखो तो दुनिया हिला के रख देंगे. एंड ही सेड कि मैं सुनना चाहता था. सेड नहीं आप आके वहीं पे सुनना तो मज़ा आ जाएगा. अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली दैट वाज अ टाइम ऑफ डबल मीनिंग सॉन्ग्स. Oh. When he came, he went there. This is 70s, 80s. हाँ, तो 89. And he went there. The song was मैं रात भर सोई, मेरे पैर दबाती रही तेरी माँ, मैं रात भर सोई, पंखा देती रही तेरी माँ, you know. हाँ.
He said, "What is this?" Okay. I mean, म्यूजिक डायरेक्टर उनके हिसाब से वो ठीक थे, उनको हिट गाना देना था और चल ही रहा था वो. Correct. ये वैष्णो माँ को दिमाग में लेके गए थे, correct. तो वाज वेरी अपसेट. और मुहूर्त तो हम लोग सब पहुंच गए थे वहाँ पे, तो ही वाज लाइक फ्यूरियस कि ये क्या है, यू नो, कि मतलब मैं वैष्णो देवी और मतलब मेरे फिल्म में ये गाना आए. Correct. दैट वाज द टाइम आई हैड आई सेड, गुलशन जी आप. देन ही वाज, यू नो, ही वाज वेरी एंग्री. तो ही सेड कि ये हम लोग कोई मतलब एक गाने के ऊपर वगैरह इतना वो नहीं, मतलब यू नो पैसा, मतलब इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज अ सॉन्ग. ओके, बट ही सेड कि हम लोग अगर मेन है कैसेट बेचना, बिकॉज Yes, that was your main. हाँ. जिसमें 1 लाख कैसेट एक दिन में होती है, Correct. तो हमको वो बेचना है, तो बिकने के लिए हमको गाने डालने पड़ते हैं. और हमारे ऊपर माता वैष्णो देवी की इतनी कृपा है, हम जो डालते हो बिकता है. सो आई सेड ये अच्छी बात है, बिकॉज दैट टाइम दे वर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्जन्स. Cover version. हाँ, सो हम लोग जो भी डालते हैं वो बिकता है. आई सेड अगर वैष्णो माँ की कृपा है गुलशन जी, और आप जो करते बिकता है, तो अच्छा डालो ना उसमें. बिकना है ना, यू कैन टेक अ चांस, यू कैन टेक अ रिस्क, गिव इट अ शॉट. बोले अच्छा मतलब क्या? मैंने कहा नए डालिए ना, नए गाने डालिए, गिव मी अ चांस, लेट मी वर्क अपॉन एन एल्बम. जो गाने आप वर्जन्स डालते हैं ना, उसी मूड के, उसी कैरेक्टर के गाने नए बना के डालेंगे ना, तो कौन करेगा ऐसे? इफ़ यू ट्रस्ट मी. ये 1 लाख रुपए पे कोई इतनी ह्यूज अमाउंट नहीं दैट यू कांट ट्रस्ट मी विद इट. सो ही टोल्ड सुशील जी, आई मीन Let her do it. आई वेंट टू आनंद मिलन. ऐसे भैया ये करने, सिचुएशन क्या है, कौन हीरो हीरोइन है? कोई हीरो हीरोइन नहीं है. सिचुएशन वही है जो आज से 40 साल से चली आ रही है, 50 साल से वही सिचुएशन है. लड़का लड़की मिले, लड़का लड़की बिछड़ गए, मेले में मिले, मेले में बिछड़ गए, ये तो होता है. सैड सॉन्ग. दैट इज हाउ लाल दुपट्टा गॉट मेड. Yes, because I remember that was the Yeah. first album made without a film. हाँ, और उसके बाद फिल्म, गाने. अरे फिल्म क्यों बनी उसके बाद? देन ही सेड कभी इसको पॉपुलर, इट बिकम अ इंस्टेंट हिट. ही सेड नो, अभी ये गाने छाया गीत में चलाने चाहिए. ना छाया गीत में जब तक फिल्म का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कोई एक टीम ली थी, लड़का लड़की, और उनके ऊपर गाने पिक्चराइज किए थे. वैसे नहीं, जब तक यू डोंट हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ अ फिल्म, तब तक छाया गीत नहीं चलाएगा. ही से व्हाट्स सो डिफिकल्ट, मतलब यू नो, जो जिसका पैशन होता है उसमें. ही सेड कि 60 मिनट का तो ऑलरेडी आपके पास शूट किया हुआ मटेरियल है गानों का. बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके स्टोरी बना दो, और जस्ट वो ठप्पा लगे कि फिल्म है, करके वो फिल्म बनी. एंड देन you know, हाँ, that was, and I remember music directors asking me, ये क्या है, ये गाना है, फिल्म है, ये जो भी है, अच्छा है गाना. So that is how it happened. Yeah, so he was very encouraging. मतलब अगर कुछ अच्छी आइडिया अगर है और कुछ क्लिक होता है, तो he was मतलब he really went out of his way to support, whether it was music directors or you know ऐसे. And then when I said कि नहीं अभी गुलशन जी, now I will turn to devotionals, he was horrified. He said I have worked like nothing, you know, to मतलब इतनी मेहनत की कि you know उसको प्रमोट हो गए. I said नहीं, पर वही तो मैंने बोला हुआ था कि नंबर 1 होने के बाद then I will dedicate myself to devotional. But as luck would have it, उनका भी डिवोशनल सडनली पिकअप हुआ. नॉर्थ इंडिया में तो डिवोशनल, एंड दे हैड VCD था उनके पास, तो वो पिक्चराइज वगैरह होके ना, तो एवरीथिंग सपोर्टेड इट. That's right. एवरीथिंग सपोर्ट, या एब्सोल्युटली टेलर मेड था वो. I think he was also Shiv Bhakt, no?
ग्रेट शिव भक्त। शिव भक्त है। और वो वैष्णो देवी में तो उन्होंने वो प्रसाद वो तो अभी भी चल रहा है, हाँ, वो but तो अभी he भी चल, but he started was it. a great But he great शिव started भक्त। it. yes yes, तो he कब was a का great 70s 80s में शुरू किया था उन्होंने। must be Yeah. he was a great शिव भक्त। इनफैक्ट जब गुजर गए भी वो शिव मंदिर में ही गए थे ना। When शिव that मंदिर happened, yeah. yeah, so that was a huge thing। You were married also to a musician, na? I mean, Yes, after all, Arun ji, Arun ji, of of course, course, I we knew knew him. him. Yeah, of course, and he was such a good musician. मुझे अभी भी याद है that oh Krishna. Yes, that you are was the yes greatest yes, but musician before of this that, world. He had made so many nice but compositions. before that, all the Marathi films that he scored music for under the name of Anil Arun, Yes. they were all silver jubilee or So golden all jubilee silver hits। jubilees, yeah. अष्टविनायक is also अभी भी कम गणपति और अष्टविनायक के गाने गली गली में बजते हैं। Correct. You know, yes, no yes. festival is complete without that। That's right. Yeah. So he was a very successful and Musician. musician, a music arranger. He was all along with Bapida Yes. and S.D. Burman. S.D. Burman, yeah. Because there is an Arun Podwal Chowk also here. Yes, on the 16th. Yeah, 16th Road. Yeah. Which is so important because, you know, he was such a good musician. Absolutely. Yeah. So you actually had music from all sides, even if your father didn't want you to become a singer. आपने शादी की musician से. My, yes, of course, Arun ji तो थे ही, but my greatest inspiration was my father-in-law. He just kept dreaming that Arun ji's father, Oh. कि मेरी बहू सिंगर बनेगी, अच्छा. which is so rare, Yes, that's right. Yeah. you know. Yeah. And my So you had mother-in-law, music from everywhere, actually. their blessings, absolutely. You know, at that time जब हीरो आप तू मेरा जानू है, it was so popular और आप हर जगह we used to hear you sing it. How many times I've heard you sing it live? So many functions. At that time, I remember people used to say, such a pretty face, she should be in front of the camera. What is she doing in the recording rooms? But we were not basically attuned to thinking like that, you know. So जब भी TCS में बोलते थे कि नहीं आप पे शूट करना, ऐसे you please don't do this, you know, मतलब हम लोगों को ये सब की आदत नहीं है। Yeah. So even after so many years, people ask for a selfie and photograph. I keep shying away because अभी तक वो फैमिली के संस्कार इतने हैं कि नहीं, मतलब Yeah. today everybody wants to be in the camera. Look at this one. Come camera, he has to be here. Otherwise, he's not with me. Yeah? He's with Your dog is here because of the camera. Absolutely. He just looks at the camera. He'll come चुपचाप बैठा रहेगा. Please He show loves him, music. He loves music also. Oh, he does? हाँ, when I go to the studio, हमारा studio है. Throughout the song, he will sit like that and listen to it. How sweet, how sweet. So today's generation, today's everybody wants a selfie, everybody wants a photograph. Yeah, that's true. And I remember when Aapki Adalat was made, Yeah. Rajat Sharma's program. You and Gulshan ji had come on that program. और मैं बनी थी judge उसमें. is it? Okay. Yeah. जी, जी. I mean, I remember those times, those lovely times. So I would, you know, you had such a big part to play in the success in the making of T series when it started. So now, when a film is made on Gulshan ji, what role should you have in it? I mean, how should you be portrayed in it as his inspiration, Bharti, as a let very me tell you one integral thing. part of T series? One thing I would like to tell you is, you know, it was like a hand and glove combination. Yes. You know, कि जो whatever I put forward, तो उसको showcase करना और दुनिया तक ले जाना, वो भी उतना ही important होता है. Yes. So it was both ways. Yeah. You know, so I won't say कि नहीं मेरा इतना हाथ था और ये, and then it is up to them to realize what part I have played. Okay. है ना? So and in any case, I'm the last person, you know, and I really don't think much about all this. Okay.
बिकॉज ये दुनिया आजकल ऐसी चली है, स्पेशली थैंक्स टू सोशल मीडिया, किसी को भी कुछ भी दिखाना है, कुछ भी दिखाता है. क्योंकि हम लोग थे उस वक्त when Yeah, I this know, was going but on. then- तो हमने देखा है आप लोगों का आपका contribution. What kind आपने of देखा है, वो बराबर like you said, है. hand in glove partnership that you had with Gulshan ji. That was such a we've seen it and we've seen No, how I it know, built. I know, this but series. still it depends a lot on the people who are making the film. No, True. उनको कितना, how much they acknowledge, depends on that. And actually, it really doesn't make a difference to me. मतलब I had two experiences with you. Once I had written something which you didn't like, Star and Style में. मैंने कुछ लिखा था जो आपको पसंद नहीं आया. स्टार एंड स्टाइल नहीं, वो कोई कैलकाटा का कोई न्यूज़पेपर नहीं, that was now. वो स्टार एंड स्टाइल में बहुत साल पहले. तो आप मेरे घर पहुंच गई सुबह. ओके. You came in the morning to my house and you fired me. Ki, how could you write that? And the second time was Telegraph, Calcutta में. मैंने कुछ लिखा था जो आपको पसंद नहीं आया. You immediately sent me a WhatsApp message and said you didn't like it and I didn't expect it from you. It was not good. You shouldn't have written this. So I appreciated that actually. And I feel that, when a person reacts immediately and straightforwardly, that is so much better than andar se feeling bad. And No, then I can't pretend do to be- that. So, are you always this kind of person? Yes. Very, जो बोलना है बोल दिया. Because let me tell you one thing, even if somebody has to give me 10 crores also, I can't just झूठ मूठ का flatter a person. I can't do that. अच्छा, कोई अगर गलत छाप दिया, वो भी मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है. Okay, because I'm not, अरे मेरे लिए ऐसा अच्छा लिखो, तुम्हें अच्छा लिखो. People ask me आपने कितने गाने गाए, और my answer is जितने आपको याद है. Okay, right. Because इससे नंबर का क्या करेंगे? Correct. अच्छा, आपने इतने गाए, ऐसे बोला तो. Yeah. So I said जितने आपको पता है, जितने आपने सुने. Okay. That's a nice way of putting it. Yeah. Your life has been very unreal for me when I go through it, because you have seen great success, which I have also witnessed with you in 1983 onwards. I mean, we saw Hero, we saw all, ek ke baad, we saw you right at the peak as a playback singer. I've seen these huge reserves of devotion coming from you, these devotional albums, which also were a super hit. But I also saw from, say, 1999, 91, I saw a lot of pathos in your life. Lot of pathos, because you were barely 37 when you lost your husband. And he died suddenly. He was ill. Oh, he was ill. Yes. Okay. But he was For also more than very a year. young. He was also very Yeah, young. but he had suffered 3 massive heart attacks in a day. Oh. And after that, he passed away after about a year or so. Okay. So he didn't pass. एकदम क्या हुआ? No, एकदम आपके लिए, because you didn't know. But he was very ill. But you were kind of prepared for it? Well, he was in a condition where I knew. हाँ, कुछ होने वाला. Yeah, but then with children so small, and my mother-in-law about 87 years old. Okay, she was still alive. Of course. Okay. She passed away at the age of over 93, 94. But she was a great pillar of strength to me. To you, okay. But how did you manage as a single woman, because you were single? No, Bharti. And you had small children. Yes, of course. So I think, just God was very kind in a way that he never, मतलब मुझे हाथ कभी ऐसे नहीं करना पड़ा किसी के सामने. किसी के भी सामने. And that was the greatest strength. Both my children were musically inclined, so they were always with me. Yeah. I made sure कि I took them with me जहाँ programs वगैरह हुआ करते थे. So that was a great strength. Yes. So as a family we were always together. Okay. What did you tell yourself to get going? I didn't tell myself anything.
I just told myself that I have to keep working no matter what. Keep walking. Okay. All right. Acha. You did tell yourself that. And you have to take your children with you. Yes, of course. Because it's only when I keep walking, you know, with a straight face that my children are going to have the confidence to walk in life. Yes. Totally. Totally. Yes. Yeah. And then after that, in within 6 years or something, in 1997, you lost Gulshan ji, who was another big pillar of support for you. Yes. He was, I mean, professionally, he had a lot to do with your career. So that must have been another dhakka, isn't it? It was, yes. It was a big setback for the reason that I had put everything into T-Series. Yes. I remember your whole career you had just put into Yeah, it. Yes. because whether it was film song, it was devotional, it was whatever it was, you know, like I had just cut off myself. And one reason for me cutting off myself from the entire industry was I was concentrating upon my own family. Yes. I couldn't be leaving the children just like that and then, you know, recording idhar ho rahe, program udhar ho rahe, and I'm And not T-Series like was your that. territory. You could. Yes, I mean, yeah, it you were was, I comfort didn't have, level. yeah, that was my comfort level. Yeah, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता था. Yeah, yeah. I just go and sing. Correct, correct. But you were a director there, no? No, I was Oh, never. you were never. I was never a director. Acha, acha. I see. Okay. I was only a singer. You were only a singer. Okay, okay. Acha, acha. Okay. But you had concentrated all your singing Yes, on because- that, yeah, in that because, company. you Because know- they gave you the opportunity. Also. Yes, and I got it. I mean, किसको इतना who would be so lucky to get, I mean, जिस तरह से everything Was laid out. laid out and एक के बाद एक हिट भी होते गए ना. पिक्चर्स बहुत लोग बनाते हैं, म्यूजिक बहुत लोग बनाते हैं, पैसा भी उसमें बहुत डालते कि इतना बड़ा हिट Yes. खाली पैसे से नहीं होता है. Correct, correct. Oh, that To be appreciated by people. creativity. Yes. Yeah, yeah, So absolutely. वो एक बहुत yeah, that was a big turning point. But I remember one incident, you know, when this happened, I was totally, I didn't know what to do. Because that came suddenly. What to do, because तब तक मैं programs करती नहीं थी. Okay. I programs ही नहीं करती थी. I was heavily into recordings only. Because एक even Gulshan ji felt, you know, कि नहीं आप प्रोग्राम के लिए इधर उधर करेंगे, कहाँ कैसा माइक होता है, कहाँ कैसा, तो उसमें वोकल कॉर्ड्स अफेक्ट होते हैं. सो ही यूज्ड टू बी वेरी पर्टिकुलर कि नहीं, यू कॉन्सेंट्रेट अपॉन म्यूजिक एंड मतलब रिकॉर्डिंग्स. और तो उस हिसाब से भी, यू नो, कि जैसे कोई प्रोग्राम्स करते रहते हैं तो लोग कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं प्रोग्राम्स है वगैरह, वो भी नहीं था. एंड बट I always looked at T-Series ki I told Vaishno Devi, I said, look, T-Series for me is Vaishno Devi ki company, I never forget that. Yeah. So you look after me, you know, मतलब बाबूजी के साथ मैंने शुरू किया, गुलशन जी came in later on, but for me constant Vaishno Devi. Vaishno Devi. So you please give me a direction and you, मतलब ये मेरी भावना है. You have to show me whether what I have done is right or wrong, whether you are with me or not. You know, that was the time in 1997 December that I got the cultural ambassador to devotional music. I got felicitated by the United Nations of America. Wow. Okay. You know? Yeah. Yes. Yeah. So that was again a huge, you know, like A कि boost. मैं हूँ तुम्हारे साथ. And every time that I have faced some difficulty in life, ये मेरे साथ मतलब God has been superlatively kind. कि एक होता है कि नहीं मैं हूँ तुम्हारे साथ. Correct. Correct. ऐसा don't think that you are alone. I am there with you. Totally. Totally. Something out of the world happens, not कि not like a normal award, not something कभी मैंने ऐसा unexpected कभी सोचा भी नहीं था मैंने, you know. Yeah. So and then of course मेरे साथ माने जी जुड़ गए, and he used to work in Shri Sound. So he said
ताई मुझे आपके साथ रख लो। आई सेड लुक, इतना तो मैं काम नहीं कर, नहीं मैं काम लेके आऊँगा। आई सेड मैं काम लेके आऊँगा, हम लोग प्रोग्राम शुरू करेंगे, आप चिंता मत करो। एंड आफ्टर दैट देन आई स्टार्टेड डूइंग प्रोग्राम। ओके, अच्छा, ओके, एंड यू स्टिल डूइंग? आई एम स्टिल डूइंग। ओके, पर अभी तो रिकॉर्डिंग्स भी बहुत हो रहे हैं। अच्छा, ओके, एंड बट yes, Mane was a great source of inspiration for me, and he really मतलब एक उसकी नेचर भी ऐसी थी ना, तो he was very sweet, तो बहुत प्रोग्राम्स किए। You know, just one more thing on Gulshan ji. When he passed away, it was very tragic assassination. It was cruel, and I think he paid the price for just being wearing his devotion on his sleeve. You know, I think he paid the price for that. He would have been very happy in today's mahal, I would think. He was much needed actually. He was much needed in today's mahal. Yes, yes. And I always felt he paid the price for being so devoted, for wearing his devotion on his sleeve. I won't say devotion. I don't think that was the cause. Probably people wanted something else out of him. Business. Whatever. But were you happy with the way the court thing has gone? Because you were one of the witnesses. Bharti, I have never really, I don't want to say that not given it a thought or whatever, but then I have seen too much of life where people twist and turn things to to suit themselves. So what is there for me to say? So you've seen that in the court of law also, things being नहीं वो तो बहुत देखा है, मतलब पूरी दुनिया में देख रहे हैं ना, कोर्ट ऑफ लॉ क्यों, वैसे देखने जाओ तो पूरी दुनिया ही कोर्ट है। और But now सारी चीजें तोड़ मरोड़ करके पीपल अपना वो कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग आजकल रील्स देखते हैं, ऑन द यूट्यूब भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, they just write and talk anything अपना खुद का बेचने के लिए at the cost of people's families and family life, है ना, unscrupulous। तो उस चीज़ का मतलब हम दुखी होके what we feel bad is for the person who has gone. Absolutely. एक इंसान चला गया है, अब उसके बाद जिस तरह से वो तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड है ना, कहाँ सच और झूठ पे डिपेंड है, वो तो नहीं है डिपेंड। So let's not go there then. The one thing which I hesitate to ask you about, but I will have to, is about your son, because I think what you went through, people lose husbands, people lose partners, to lose your son must have been absolutely shattering. Bharti, let me tell you one thing. He was only 35. I know, but I think looking back on life, as you said, it has been a unreal. क्या मतलब, I don't even know how to describe it. But पूरी मेरी journey है, and there's been a pattern to it. I really feel that my life is only about learning non-attachment. Oh, okay. So because I'm always been spiritually inclined, and too much we get attached to a certain thing, and that is the reason we keep taking births, है ना? तो लेकिन eventually at some point of time we have to go towards moksha. Everybody has to go. आप मानो नहीं मानो तो जल्दी आप कदम उठाते हो, नहीं मानो तो थोड़े और जन्म लगते हैं, इतना ही डिफरेंस है। I think we should stop with that. Yes, it's a wonderful moment to stop at. Yeah, great. Thank you so much. Thank you very much. निजे मानसे मंदिरे सन्निधेहि प्रसीद प्रसीद प्रभो रामचन्द्र ससौमित्रिणा कैकेयी नन्दनेन स्वशक्त्यानुभवेन
स्वभक्ताग्रगण्यै कपीशैर्महिषैर् अनेकैरनेकैश्च रामप्रसादतः